the jet streams. इसके पहले का जो भी था, though we have covered jet stream in the earlier video as well, but there was a lot of confusion in my mind, so I thought of preparing it once again. So we'll talk about what exactly a jet stream is. Jet stream क्या होता है? Jet stream एक strong narrow current है जिस of air which is concentrated along a quasi horizontal axis in the upper troposphere or the lower stratosphere, जिसमें strong lateral and vertical wind shear है and featuring one or more velocity maxima. तो जेट स्ट्रीम्स क्या होता है? एक नैरो करंट है, स्ट्रॉन्ग एंड नैरो करंट विच इज ऑफ द एयर, करंट ऑफ द एयर विच इज कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग क्या क्वाजी हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है ये पूरा. ये या तो अपर एटमॉस्फेयर में होगा या फिर इट विल बी इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर. ओके. And it is characterized by there is strong lateral and vertical wind shear, which features one over velocity maxima. Now there are 1,000 in kilometers in length and few hundreds in width. Okay. Now they are normally move from west to east direction. So this is the Earth. This is the jet streams. So it will move in the west to east direction. Now they follow a zigzag path. एक zigzag path follow करते हैं ये. And they are not straight lines. Why? Because of the meandering effect, because of the air pressures coming from the opposite sides. इसको in the form of हम rose by waves भी कहते हैं. Now ये जो winds हैं, they are faster during the winter time. Entire system, it follows the sun changing its position with season. So if it's summer season, it will move northwards. If it's winter season, it will move southwards. So it changes as per the sun. Now formation of jet streams. How jet streams are formed. So temperature difference होता है दो region के बीच में, that is the region of warm air mass and the region of cold air mass leads to the formation of jet streams. Now the rate of decrease of pressure with altitude vary करता है with different between the regions of warm and cold air mass. So the rate of decrease in pressure, अब हमको पता है that with increase in altitude, जितना हाइट इंक्रीज होगा, the pressure increases, right? Pressure increase because volume बढ़ रहा है आपका, so pressure increase होगा. So the rate of decrease of pressure with the altitude vary करता है कि वो region warm air mass का है कि cold air mass का है. इससे क्या होगा? It will result into strong pressure gradient with altitude जिससे strong movement होगा winds का in the upper troposphere या फिर lower troposphere में, stratosphere में. Now due to the strong winds, the Coriolis force, it becomes geostrophic in nature. क्योंकि there is strong wind force which is coming and because of the Coriolis in nature, ये geostrophic in nature बन जाता है. Now जितना ज्यादा temperature difference होगा दो regions के बीच में, उतना stronger winds रहेगा. Now, how many kinds of winds or jet streams are present? First is polar front jet stream. ये फॉर्म होता है जहां पर फेरल एंड पोलर सेल्स मीट करते हैं. So feral and polar cells, if you remember that जब pressure belts का formation होता है, at that time there are three cellular circulations which is created, Hadley, feral and polar, जिसमें कि जब polar and feral cells meet करेगा, it will lead to the formation of polar front jet streams. ये west to east move करता है and it will be irregular and discontinuous. Next comes subtropical western jet streams. ये jet streams associated है with the temperature gradient between Hadley cell
और फेरल सेल के बीच में. दिस इज मोर रेगुलर एंड स्ट्रॉन्ग इन नेचर एंड ये भी मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट. The third one is tropical easterline jet streams. It forms over India and Africa. So किसके ऊपर फॉर्म होता है? इंडिया और अफ्रीका के ऊपर during the summers, and when they are associated with the intense heating of Tibetan plateau in the northern plains. But इसका डायरेक्शन जो है that is from east to west. So tropical easterly jet streams इंडिया और अफ्रीका के ऊपर फॉर्म होता है during the summer's time. They are associated with intense heating of Tibetan plateau and move करता है from east to west. Local jet streams due to local thermal and dynamic conditions जैसे कि सोमाली jet stream हो गया. Polar night jet streams, it is developed over the polar region above the troposphere, associated with strong temperature difference between the regions of very cold polar air and slightly warm temperature. Now, next, what's the significance of jet streams? Why do we need jet streams? First point is that they are responsible for cyclonic and anticyclonic circulations on the surface. अब जैसे डाइवर्जेंस हमने पढ़ा था, दिस वॉज ए डाइवर्जेंस. सो अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है जेट स्ट्रीम में, इट विल लीड टू लोअर कॉन्वर्जेंस. एंड अगर अपर डाइवर्जेंस कॉन्वर्जेंस हो रहा है, इट विल लीड टू लोअर डाइवर्जेंस. So jet streams, they are responsible for cyclonic and anti-cyclonic circulations along the surface. जैसे जैसे jet stream move करता है across the world, it changes the local weather conditions by suppressing or accentuating the precipitation conditions. Jet stream aircraft navigations के लिए भी use होते हैं. As jet stream meanders, क्योंकि meander करता है ये like this, ये हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द अर्बन एरियाज. फॉर एग्जांपल, जब दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, इन दैट के सिनेरियो जेट स्ट्रीम्स आर दी एयर मासेस व्हिच टेक्स ऑल दी pollutants from the air mass and helps in clearing the smog overnight. Polar night jet streams responsible for ozone depletion near the polar region. La Nina conditions के during strong meandering result करता है trapping of hot air, causing the formation of heat dome. Monsoons of South Asia control होता है by the subtropical easterly jet streams, tropical easterly jet stream and sonali jet streams का जो phenomena of western disturbance experience होता है in winter over the northwestern part of India because of the subtropical westerly jet stream. ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन एंड देयर इंटेंसिफिकेशन. अगर कभी भी जेट स्ट्रीम्स बहुत वीकेंड हो जाता है, इट विल रिजल्ट इनटू हायर मियांडरिंग एंड इम्पैक्ट करता है ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस को, जिससे एक्सट्रीम वेरिएशंस होता है इन द वेदर कंडीशंस. वेदरिंग weakening of it will in summer it will cause hot air from the tropical region to move towards the temperate region which will result in heat wave, जैसे अभी यूरोप में हो रहा है. और क्योंकि मियांडरिंग अगर स्मॉल हो गया तो ये और ज्यादा मियांडर करेगा वीक होने के चक्कर में. इफ इट स्टार्ट्स टू मियांडर मोर, द एयर विल बी एबल टू फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टेम्परेट रीजन, दे विल बी रिजल्टिंग इनटू हीट वेव्स. जितना लार्ज एरिया होगा लो प्रेशर का, कोल्ड एयर सराउंडिंग, large area of low pressure and cold air surrounding the Earth's core. Now vortex क्या होता है? सॉरी, इसको पोलर वर्टेक्स में आ गए थे. सो पोलर वर्टेक्स क्या होता है? इट्स द लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर विच इज सराउंडिंग द अर्थ्स पोल. वर्टेक्स मतलब हो गया काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो एट एयर विच कीप्स द कोल्ड पोलर एयर लॉक्ड इनसाइड. It keeps the cold polar air locked inside. Now, polar winter night jet streams keep this jet stream covered with strong winds. Occasionally, जब भी vortex weaken होता है due to weakening of jet streams, vortex expand करता है और send करता है cold polar air को southwards along with the jet streams, जिससे temperature बहुत कम हो जाता है in the southern regions of the cold to the colder level of below 0 degree. समझा?
We'll see a video. Jet streams. Jet streams are another name.
So we saw how the jet air masses, how they are impacting the weather conditions, how they are formed, what functions they have. So, yep, significance क्या है? So that is what can be asked in the exams. Next आते हैं air mass के ऊपर. Air mass is the block of air where the temperature, humidity, surface, pressure is same. It's an extensive portion of the atmosphere whose physical properties, जैसे कि temperature, pressure, humidity, they are homogeneous horizontally and vertically for hundreds of kilometers. Now, the temperature of source, they shall remain uniform horizontally with gradual changes in the vertical direction. Humidity conditions should also be same with least variability, and the surface area shall remain homogeneous for few hundreds of kilometers. Now, the reasons with light divergent wind, high pressure belts, and anticyclonic circulations, they are more favorable for formation of air mass due to stable conditions. Classification of air mass, source के basis पे continental maritime, temperature के basis पे warm and cold, pressure के basis पे stable unstable, and latitude के basis पे it's Arctic, Antarctic, polar, temperate, and equatorial. So this is the distribution of the air masses throughout the world. As we can see that in the northern hemisphere, there are cold air masses, and from uh, temperate to subtropical in the southern hemisphere, we have hot air mass, and then again we have hot cold air mass in the Antarctic region. Now, what is the significance of air mass? First, air mass transport heat from one region to the another, and it helps in the global distribution of seasons or temperature. So temperature को moderate रखने का काम करता है air mass. Temperature, it will transport heat and global distribution, global distribution of temperature. Now, जैसे जैसे move करता है air mass across the world, it changes the temperature and weather conditions of the destination region. So it impacts the temperature and weather conditions. Maritime air mass being more moisture towards the continent region, bring in humidity and causing precipitation. Now, क्योंकि maritime air mass बहुत मॉइस्चर लेके आता है towards the continental region, it will lead to precipitation. And dry continental air mass along the subtropical regions, they help in maintaining the arid conditions and reduces the chances of precipitation. ड्राई और कोल्ड एयर मास जो कि फॉर्म होता है ओवर साइबेरिया एज वेल एज कनाडा ड्यूरिंग द विंटर्स अफेक्ट करते हैं सराउंडिंग एरियाज को एंड कोल्ड कंडीशंस फॉर्मेशन होते हैं. To moist the maritime air mass of the Indian Ocean, it plays an important role in precipitation over India through Indian Ocean. Maritime tropical or equatorial air masses, they provide favorable conditions for the development of tropical cyclone. इंटरेक्शन जो होता है वार्म और कोल्ड एयर मास का इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स और इसीलिए टेम्परेट साइक्लोन्स होता है. So this was air mass. Has been asked once in the exam. Next topic is front and temperate cyclones. Front क्या होता है? It's a narrow zone of transition between two air masses
of differing temperature and humidity conditions. So if there's a warm air mass and there's a cold air mass, and the narrow zone of transition which is dividing these two air masses, this results into fronts. ये फॉर्म होता है इन द मिड लैटिट्यूड या फिर टेम्परेट रीजन्स एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज फ्रंटोजेनेसिस एंड decay is called as frontolysis. So these are cold wars warm airs masses. When it comes in contact with each other, they form a front like structure between the two. कितना तरह का fronts होता है? There are four types of fronts. First is stationary front. Stationary front है जब surface position of a front it's not changing and the दोनों air mass है they are unable to push each other. So if the air masses they are not changing, the surface position is not changing, the air masses they are not being able to push each other, this results into stationary fronts. Now जब stationary fronts disturb होता है then it will result in warm front or cold front. So we'll learn what warm front is. So this is the scenario of warm front. Now there is this cold air mass coming and there is this warm air mass. Now this warm air mass overrides the cold air mass. And then there is a formation of nimbus stratus cloud here. This is, so cold air mass undercuts and warm air mass overrides. So the boundary between warm air mass and cold air mass, जहाँ पे warm air mass is advancing and overriding the cold air mass is what leads to the formation of warm air front, warm front. So the gradient of front, it is gradual, which lead to slow upliftment of warm air, जिससे nimbus stratus clouds का formation होगा. Now the moderate rainfall over the larger area. Next is cold fronts. Cold front हो गया when there is a bound between warm and cold air mass, जहाँ पे now cold air mass is advancing and is undercutting the warm air mass. Result क्या होगा? There will be steeper gradient along the front, which will lead to rapid upliftment of warm air, and it will lead to formation of cumulonimbus clouds. Cumulonimbus clouds का formation होगा, right? जिससे there will be heavy rainfall over the smaller area. Now, what is occluded front? Occluded front is the later stage of the front formation, जहाँ पे air in the warm sector it no longer exists at the ground surface because of the meeting of the cold and warm fronts. So when both the fronts meet, it will lead to occluded front. Now we'll talk about how the temperate cyclones are formed. टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होता है? 6 स्टेजेस में इसका फॉर्मेशन होगा. पहला तो होता है कन्वर्जेंस ऑफ टू एयर मास, जिसका दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है. वन इज कोल्ड एयर मास एंड द अदर इज हॉट एयर मास एंड और द वार्म एयर मास, एंड दीज एयर मास दे मूव पैरेलल टू ईच अदर एंड उसके चक्कर में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी फ्रंट्स. नाउ जब वार्म एंड कोल्ड एयर पेनिट्रेट करते हैं एक दूसरे के टेरिटरी में, इट विल रिजल्ट इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ वेव लाइक फ्रंट. जब वार्म और कोल्ड फ्रंट स्टार्ट करते हैं टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड वार्म सेक्टर इट इज वेज्ड बिटवीन द कोल्ड सेक्टर्स. व्हाई? बिकॉज द वार्म सेक्टर इज नॉट बीइंग एबल टू rise because of the presence of the cold air. It is wedged. Warm sector narrowed हो जाता है to the extent due to its advances of cold fronts. Next, occlusion starts with the warm air, which rises completely above the cold air, and warm air rising completely above the cold air, and cold front completely overtaking the warm front. Now, the warm sector completely disappear हो जाता है, occluded front is eliminated, and then cyclone it dies out. इसको हम मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन्स भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या वेव साइक्लोन भी बोलते हैं, जो कि 30 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ के रीजन में फॉर्म होता है. So this is the diagram. This is normal cold layers, यहाँ पे warm air है. Now cold air का it will take a wave like formation. उसके बाद it will take a formation. So ये stationary front था. Now the warm front is it wedges.
There's a wedging of form front wedges. Next, more wedging, occlusion happens, cyclone dies. Next आते हैं tropical cyclone. Tropical cyclone, low pressure, high velocity wind system जो कि originate हो रहा है in the tropics over the oceans. Tropical cyclone बोला जाता है इंडियन ओशन में, हरिकेन बोलते हैं अटलांटिक में, टाइफून बोलते हैं साउथ चाइना, टाइफून बोलते हैं जापान में, बगुई बोलते हैं फिलीपींस में, विले विले बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में. स्टेजेस, लो प्रेशर, फिर डिप्रेशन क्रिएट होता है, फिर बहुत मतलब इट डिपेंड्स ऑन विंड का स्पीड कि कितना विंड का स्पीड है जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं. डीप डिप्रेशन, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड देन सुपर साइक्लोन फॉर्मेशन होता है. लो क्या क्या कंडीशंस है जो कि नेसेसरी है फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन. पहला तो हो गया टेम्परेचर. जो ओशन वाटर का टेम्परेचर है कम से कम वो 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, क्योंकि जितना ज्यादा हीट अप होगा ओशन सरफेस उतना ज्यादा कन्वेक्शन होगा एंड इट विल लीड टू मोर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ द वाटर वेपर. नाउ अगर मान लो इसका डेप्थ में यहाँ पर तक ही सिर्फ इट इज 27 डिग्री एंड बिलो दैट इट इज 15 डिग्री और 20 डिग्री, will it lead to the formation of the bigger clouds? The answer is no. So therefore it the warm water should be up till 60 to 70 meters from the surface. ह्यूमिडिटी होना चाहिए क्योंकि जितना अच्छा ह्यूमिडिटी होगा उतना ज्यादा इट विल हैव द कैपेसिटी टू carry the moisture and lead to the precipitation. Coriolis force ताकि wind deflect हो सके. अगर नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न राइट हैंड साइड में और सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में. मैक्सिमम मिनिमम वर्टिकल विंड शेयर है यहाँ पर. देयर इज अ प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर कंडीशंस जो कि इंटेंसिफाई करेगा साइक्लोन्स को. एंड डाइवर्जेंस इन द अपर ट्रोपोस्फेयर, it leads to the convergence, causing strong convergence and convection near to the surface. और ये तो कंडीशंस ऑप्शनल है बट ऊपर के पांच अगर होंगे तभी जाके साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट आते हैं इम्प्लीकेशंस के ऊपर. तो साइक्लोन जो होता है इट इज फॉर्म्ड नियर 5 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. And cyclones, they are not formed along the western margins. Why? Because of the old cold ocean currents and because of the dryness and desert regions there. नॉर्दर्न इंडियन ओशन में क्यों साइक्लोन्स होते हैं सबसे ज्यादा? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड. क्योंकि साइक्लोन्स क्या होते हैं, इफ इट इज फॉर्म्ड ऑन द ओशंस इट मे रिजल्ट इनटू डीके देयर इन ओनली व्हेन इट मीट्स वार्म कोल्डर एयर. बट क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड इतना ज्यादा है इट विल लीड टू लैंड फॉर्म एंड इट विल डैमेज मोर. Next, in Bay of Bengal, why there is higher number of cyclones than the Arabian Sea? Because of the strong wind shear in the Arabian Sea. Facilier clouds का formation नहीं हो पाता है and higher water temperature in the Bay of Bengal due to influx of fresh water from various rivers. ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ये आइडियल लोकेशन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स अगर ये इक्वेटर से थोड़ा ऊपर नीचे लोकेटेड है तो, जैसे समर्स में ओवर इंडियन ओशन. इट रियली शिफ्ट्स डाउन इन अटलांटिक और पैसिफिक ओशन. द साइक्लोन्स इसमें नहीं फॉर्म होता है. नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स. सबसे पहला तो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होगा ओवर द लार्जर एरिया ऑफ वार्म वाटर विच विल बिल्ड अप इनटू द क्यूमुलम्बस क्लाउड. ये ओशन है, यहाँ बहुत ज्यादा वार्मिंग हो रहा है, इट विल लीड टू कन्वेक्शन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्यूमुलम्बस क्लाउड. The release of latent heat provides more energy to the system, supporting further strong convection. जब winds start होते हैं to descend along the sides, entire system stabilize हो जाता है. The lateral winds near to the surface, they starts to move towards the center because of the low pressure and they will start to rotate around it. Why? Because of the Coriolis force. So winds ऐसे नहीं move करके it will start to move in rotation, and after some time some of the dense air rising near the center they starts to descend at the center itself, resulting in the formation of eye. जैसे जैसे साइक्लोन इंटेंसिफाई होता है ये मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेटरी विंड्स एंड टर्न करता है टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन.
Now, under this motion, if it encounters land या cold water, it will come to an end. What are the structure of cyclone? सबसे पहला I, which is the center of the storm, and in this region we face that there is clear sky, calm conditions, lowest pressure and high temperature. I wall, एक wall of thick cumulonimbus clouds होता है with a width of 10 to 20 kilometers. It is very strong winds. It has very strong winds in the cyclone. Thunderstorms बहुत occur होते हैं. There is intense convection and rainfall. Spiral bands जो कि रेन bands भी होता है या फिर feather bands होता है which extends for hundreds of kilometers and it leads to galaxy type of appearance. Galaxy. Annular zone, the zone of suppressed cloudiness, high temperature and low humidity. Outer convective zone at the end of the main cloud mass will with instability and convection. नेमिंग कैसे नेम किया जाता है तो साइक्लोन्स को सेपरेट नेम किया जाता है इन द ऑर्डर ऑफ टू कोऑर्डिनेट डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स 2004 में 8 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रिड बनाया था दे अग्री टू हैव अ कॉमन नेमिंग सिस्टम ऑफ साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशंस नाउ हर एक कंट्री अरेंज किया गया इन अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड दे सबमिटेड 8 नेम्स व्हिच वाज अरेंज्ड इन अ मैट्रिक्स एंड वाज गिवन और assigned a name sequentially. Suggested name जो था that should be neutral politically, religiously, culturally with respect to gender and with respect to gender. Easy to pronounce होना चाहिए. Regional specialized meteorological center located in New Delhi maintain करता है list of sequential order और assign करता है. Earlier metrics expired in 2019 and again 13 countries agreed into September 2019. कंट्रीज कौन कौन सी है बांग्लादेश इंडिया ईरान मालदीव्स म्यांमार ओमान पाकिस्तान कतार सऊदी अरेबिया श्रीलंका थाईलैंड यूएई एंड येमेन नेक्स्ट आता है रिकर्वेचर ऑफ साइक्लोन्स व्हाट इज रिकर्वेचर सो इफ वी सी दैट जब भी साइक्लोन्स आता है द विंड स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन Now, जब ये north west directions में move कर रहे हैं, there are some kind of supply of air currents which is pushed downwards, and it comes in contact with the cyclonic winds which is moving from the northwestern side, and it leads to the curvature or recurvature of these cyclones. Westerlies belt it will shift down. Then only this air currents is pushed and the weakened winds of cyclone which is moving toward the north, it comes in contact with the westerly and then recurves. So जब भी air currents जो कि local atmosphere है push करता है cold air को from the poles towards the equator and it interferes with the cyclonic formation. एक cyclone which is about to diminish, it will get more wind and deflect करेगा right or eastwards under the influence of Coriolis force of westerlies. इस phenomena को हम recurvature बोलते हैं and it is very difficult to predict whether cyclonic winds will recurve or not. Next is color coded warning of IMD for cyclones. So it is used by IMD for to signify what's the intensity of the situation and the warning which is associated with it. चार color use करते हैं yellow, orange, red and green. Green is that no warning, yellow be alert, orange be prepared and red is take action. Objective क्या है क्यों हम color coding करें so that we can alert people of the hazardous weather and prepare them for handling such disasters like situation. Universal coding है and it is issued in other disaster too, for example, floods, heavy rainfall, etc. Cyclones जो है, it is represented through a matrix for respect to different regions. We have studied tropical cyclone, we have studied temperate cyclone. What's the difference between the two? Tropical cyclones mainly summer times हो रहा है, whereas temperate cyclones, it is more intense in winters. Tropical can be mainly over the sea, temperate can be both on land or sea. Tropical region 5 to 25 degree north and south में originate हो रहा है and temperate it is originating in mild latitudinal region between 35 to 65 degree latitude. Tropical is limited to smaller area, temperate occupies a large area. Trade winds के वजह से the tropical it moves from east to west and because of the westerlies the temperate moves from west to east. Forecasted by high temperature humidity but still air and
Temperate is forecasted by fall in the temperature, pressure, and wind shift. Violent winds होते हैं plus great speed है, and then there is dense clouds and heavy rains. Whereas in case of temperate cyclones, we have wind low and rainfall light. So this is climatic regions. ये हम लोग so climatic regions. So throughout the world, the regions with respect to the climates have been divided into 11 parts. Now इसमें सबसे पहला हमको 5 जोन याद रखना है, जिसमें पहला आता है कोल्ड जोन, हॉट जोन. हॉट जोन आ रहा है हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, एंड कोल्ड जोन इज इन आर्कटिक और पोलर टाइप. Then we have temperate zone divided into cold temperate zone and warm temperate zone, and then we have hot zone. हर एक जोन को we have divided into 3 parts, wherein western margin, eastern margin and central continent. तो इक्वेटोरियल और कोल्ड जोन को हमने डिवाइड नहीं किया. वी हैव हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, वी हैव आर्कटिक वर्सेस और पोलर टाइप इन द कोल्ड जोन. अगर कोल्ड टेम्परेट जोन का बात करें तो वेस्टर्न मार्जिन में वी हैव ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पे वी फाइंड डेसिडुअस फॉरेस्ट. सेंट्रल कॉन्टिनेंट में वी हैव साइबेरियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पे एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट है. ईस्टर्न मार्जिन में वी हैव लॉरेंशियल टाइप, जहां पे मिक्स्ड फॉरेस्ट है. And the latitude of cool temperate zone is from 65 degree north to 45 degree north. So if you want to see how it works, so this is 65 degree north to 45 degree. So यहाँ पे Laurentian, Siberian, British type. Laurentian, Siberian, British type. तो ये है cool temperate zone. This is cold zone. अब आ जाते हैं hot temperate और warm temperate zone. Warm temperate zone में we have ईस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन टाइप, कॉन्टिनेंट में स्टेफी टाइप एंड चाइना टाइप इन द ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न मार्जिन. मेडिटेरेनियन वेस्टर्न में, स्टेफी कॉन्टिनेंटल में एंड चाइना ईस्ट. हॉट जोन में हॉट डेजर्ट्स होते हैं वेस्टर्न मार्जिन में, सुडान टाइप है कॉन्टिनेंटल में एंड मॉनसून है ईस्टर्न में. So this is what we have with respect to climatic regions. We'll get see once how cyclones work.
This was about formation of cyclones. Structure of cyclone हमने देख लिया कैसे फॉर्मेशन हो रहा है. Okay. Temperate cyclones different. So that's it. इसका बाद का जो भी है पार्ट विल कवर. Bye bye. Thank you.